ओम गंगणपतये नमः। आज आप दिव्य नवग्रह स्तोत्र श्रवण करने वाले हैं। इस स्तोत्र के पाठन करने से और श्रवण करने से समस्त प्रकार की ग्रह बाधाएं शांत होती हैं। अक्सर देखा जाता है कि हमारी कुंडली में ग्रह पीड़ित रहते हैं, कुंडली में दोष रहता है, जिसके कारण हमारे जीवन में दारिद्रता, नकारात्मकता, रोग बाधा, धन आगमन का मार्ग बंद, कर्ज से परेशानी, तरह तरह के संकट, विघ्न विपत्ति अनायास ही आते रहते हैं। इस स्तोत्र के पाठन करने से समस्त प्रकार की ग्रह बाधाएं शांत होती है, ग्रहों की हमारे ऊपर कृपा होती है। निश्चित ही मानिए कि हमारे जीवन से अनायास ही आने वाले संकट, विघ्न विपत्ति टल जाते हैं। समस्त प्रकार की रोग बाधा शांत होती है, क्योंकि जब ग्रह हमारी कुंडली में पीड़ित रहते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में रोग बाधा भी उत्पन्न होती है और तरह तरह की कठिनाइयां हमें देखने को मिलती हैं। इस स्तोत्र के पाठन करने से, श्रवण करने से समस्त प्रकार की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और समस्त प्रकार की व्याधियां भी शांत होती हैं। यह नवग्रह स्तोत्र हमने पूर्ण 9 बार आपको श्रवण कराने के लिए उपलब्ध कराया है। श्रद्धा और विश्वास के साथ इस स्तोत्र का पाठन करिए, श्रवण करिए। निश्चित ही मानिए कि आपके जीवन से समस्त प्रकार की व्याधियां दूर हो जाएंगी। ओमस्य श्री नवग्रह स्तोत्र मंत्रस्य वेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः मम ग्रहानुकूल्यार्थे नवग्रह स्तोत्र जपे विनियोगः। जपा कुसुम संकासं काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। दधि शङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसन्निभं नमामि शशिनं देवं शम्भोर्मुकुटभूषणं। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। हिमकुन्दसमाभासं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। इदं व्यासमुखोत्पन्नं पठिष्यन्ति समाहिताः दिवा वा यदि वा रात्रौ तेषां शान्तिर्भविष्यति। ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं नरनारीन्द्रपाणां च भवेत् दुष्स्वप्ननाशनं। ग्रहनक्षत्रपीडाश्च तस्कराग्निसमुद्भवाः सर्वाश्चास्य विनश्यन्ति व्यासप्रोक्तान्न संशयः। इति श्रीव्यासविरचितं नवग्रहस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओमस्य श्री नवग्रहस्तोत्र मंत्रस्य वेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः मम ग्रहानुकूल्यार्थे नवग्रहस्तोत्र जपे विनियोगः। जपा कुसुम संकासं काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। दधि शङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसन्निभं
सन्निभं नमामि शशिनं देवं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भशम्भूतं विद्युत्कान्तिशमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दसमाभासं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डशम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भशम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इदं व्यासमुखोत्पन्नं पठिष्यन्ति समाहिताः दिवा वा यदि वा रात्रौ तेषां शान्तिर्भविष्यति ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं नरनारीन्द्रपाणां च भवेत् दुष्स्वप्ननाशनं ग्रहनक्षत्रपीडाश्च तस्कराग्निसमुद्भवाः सर्वाश्चास्य विनश्यन्ति व्यासप्रोक्तान्न संशयः इति श्रीव्यासविरचितं नवग्रहस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओमस्य श्रीनवग्रहस्तोत्रमन्त्रस्य वेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः मम ग्रहानुकूल्यार्थे नवग्रहस्तोत्रजपे विनियोगः जपा कुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसन्निभं नमामि शशिनं देवं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भशम्भूतं विद्युत्कान्तिशमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दसमाभासं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डशम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भशम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं
रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इदं व्यासमुखोत्पन्नं पठिष्यन्ति समाहिताः दिवा वा यदि वा रात्रौ तेषां शान्तिर्भविष्यति ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं नरनारीन्द्रपाणां च भवेद्दुष्स्वप्ननाशनं ग्रहनक्षत्रपीडाश्च तस्कराग्निसमुद्भवाः सर्वाश्चास्य विनश्यन्ति व्यासप्रोक्तान्न संशयः इति श्रीव्यासविरचितं नवग्रहस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओमस्य श्रीनवग्रहस्तोत्रमन्त्रस्य वेदव्यासऋषिः अनुष्टुप् छन्दः मम ग्रहानुकूल्यार्थे नवग्रहस्तोत्रजपे विनियोगः जपा कुसुमसङ्कासं काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसन्निभं नमामि शशिनं देवं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दसमाभासं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इदं व्यासमुखोत्पन्नं पठिष्यन्ति समाहिताः दिवा वा यदि वा रात्रौ तेषां शान्तिर्भविष्यति ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं नरनारीन्द्रपाणां च भवेद्दुष्स्वप्ननाशनं ग्रहनक्षत्रपीडाश्च तस्कराग्निसमुद्भवाः सर्वाश्चास्य विनश्यन्ति व्यासप्रोक्तान्न संशयः इति श्रीव्यासविरचितं नवग्रहस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओमस्य श्रीनवग्रहस्तोत्रमन्त्रस्य वेदव्यासऋषिः अनुष्टुप् छन्दः मम ग्रहानुकूल्यार्थे नवग्रहस्तोत्रजपे विनियोगः जपा कुसुमसङ्कासं काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसन्निभं
तारकाग्निसन्निभं नमामि शशिनं देवं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दसमाभासं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इदं व्यासमुखोत्पन्नं पठिष्यन्ति समाहिताः दिवा वा यदि वा रात्रौ तेषां शान्तिर्भविष्यति ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं नरनारीन्द्रपाणां च भवेद्दुःस्वप्ननाशनं ग्रहनक्षत्रपीडाश्च तस्कराग्निसमुद्भवाः सर्वाश्चास्य विनश्यन्ति व्यासप्रोक्तान्न संशयः इति श्रीव्यासविरचितं नवग्रहस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओमस्य श्रीनवग्रहस्तोत्रमन्त्रस्य वेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः मम ग्रहानुकूल्यार्थे नवग्रहस्तोत्रजपे विनियोगः जपा कुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसन्निभं नमामि शशिनं देवं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दसमाभासं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं
सम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इदं व्यासमुखोत्पन्नं पठिष्यन्ति समाहिताः दिवा वा यदि वा रात्रौ तेषां शान्तिर्भविष्यति ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं नरनारीन्द्रपाणां च भवेत् दुष्स्वप्ननाशनं ग्रहनक्षत्रपीडाश्च तस्कराग्निसमुद्भवाः सर्वाश्चास्य विनश्यन्ति व्यासप्रोक्तान्न संशयः इति श्रीव्यासविरचितं नवग्रहस्तोत्रं सम्पूर्णम्। मत्स्य श्रीनवग्रहस्तोत्रमन्त्रस्य वेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः मम ग्रहानुकूल्यार्थे नवग्रहस्तोत्र जपे विनियोगः जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसन्निभं नमामि शशिनं देवं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दसमाभासं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इदं व्यासमुखोत्पन्नं पठिष्यन्ति समाहिताः दिवा वा यदि वा रात्रौ तेषां शान्तिर्भविष्यति ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं नरनारीन्द्रपाणां च भवेत् दुष्स्वप्ननाशनं ग्रहनक्षत्रपीडाश्च तस्कराग्निसमुद्भवाः सर्वाश्चास्य विनश्यन्ति व्यासप्रोक्तान्न संशयः इति श्रीव्यासविरचितं नवग्रहस्तोत्रं सम्पूर्णम्। मत्स्य श्रीनवग्रहस्तोत्रमन्त्रस्य वेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः मम ग्रहानुकूल्यार्थे नवग्रहस्तोत्र जपे विनियोगः जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णव
दानवसन्निभं नमामि शशिनं देवं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भशम्भूतं विद्युत्कान्तिशमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दसमाभासं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डशम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भशम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इदं व्यासमुखोत्पन्नं पठिष्यन्ति समाहिताः दिवा वा यदि वा रात्रौ तेषां शान्तिर्भविष्यति ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं नरनारीन्द्रपाणां च भवेद्दुःस्वप्ननाशनं ग्रहनक्षत्रपीडाश्च तस्कराग्निसमुद्भवाः सर्वाश्चास्य विनश्यन्ति व्यासप्रोक्तान्न संशयः इति श्रीव्यासविरचितं नवग्रहस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अस्य श्रीनवग्रहस्तोत्रमन्त्रस्य वेदव्यासऋषिः अनुष्टुप् छन्दः मम ग्रहानुकूल्यार्थे नवग्रहस्तोत्रजपे विनियोगः जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसन्निभं नमामि शशिनं देवं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भशम्भूतं विद्युत्कान्तिशमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दसमाभासं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डशम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भशम्भूतं
भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इदं व्यासमुखोत्पन्नं पठिष्यन्ति समाहिताः दिवा वा यदि वा रात्रौ तेषां शान्तिर्भविष्यति ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं नरनारीन्द्रपाणां च भवेत् दुष्स्वप्ननाशनं ग्रहनक्षत्रपीडाश्च तस्कराग्निसमुद्भवाः सर्वाश्चास्य विनश्यन्ति व्यासप्रोक्तान्न संशयः इति श्रीव्यासविरचितं नवग्रहस्तोत्रं सम्पूर्णम्।